Hello and welcome. I'm Kumar Wani. I make videos on academic topics, study skills, and career guidance. In today's presentation, we are going to discuss about non-verbal communication. Non-verbal communication क्या है इसके बारे में आज के presentation में हम discuss करेंगे. So let us start with the learning objectives of this session. इस session में हम जानेंगे what is body language, significance of the body language in non-verbal communication, positive and negative body language क्या होता है उसके बारे में, and as usual with my video lectures, at the end of the lecture we will also discuss few of the review questions. First, let us start with what is body language. What is body language? In the body language, we see body movements. Body movements include gestures, postures, and facial expressions. These movements convey a wide range of emotions, intentions, and attitudes of a person who is involved in communication. जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, body movements एक speaker का वो voluntary या involuntary movement होता है जो स्पीकर ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन डिस्प्ले करता है या फिर यूज करता है. इसमें हैंड जेस्चर्स भी आते हैं, बॉडी पोस्चर भी आता है. तो हैंड जेस्चर्स और बॉडी पोस्चर जो है वो स्पीकर को अपनी आइडियाज, इमोशंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने में हेल्प करता है. तो वो कॉन्फिडेंस भी शो करता है, वो नर्वसनेस भी शो करता है, या फिर hand gestures and body posture can also showcase boredom of the speaker. Now, these movements are sometimes voluntary and sometimes involuntary. Body language can be intentional while other movements are subconscious. Both types can provide valuable insights into a person's thoughts and feelings. जब भी कोई स्पीकर अपनी बात रखता है या कम्युनिकेशन करता है तो बॉडी लैंग्वेज के जो मूवमेंट्स होते हैं, बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो समटाइम्स वॉलंटरी होती है या समटाइम्स इनवॉलंटरी होती है. अगर वो मूवमेंट्स वॉलंटरी हो या इनवॉलंटरी हो, बोथ टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हेल्प अस आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द स्पीकर इन अ बेटर वे. And that is where our next point comes in. As I told you just a while ago, these movements can be voluntary or involuntary, and these movements help the speaker to enhance the communication in a better way. It also helps in explaining the emotional depth of the speaker, emotional depth of the message that is being conveyed or discussed with the listener or the audience. These emotions, these feelings, these body movements help us reveal the emotions and intentions of the speaker's mind. It also helps the speaker, it also helps the listener in both ways. I mean, speaker can use body language to emphasize the strength of his emotions, to reveal the intentions in a more emphatic way, in the more strong way. Also, the listener, if listens carefully and watches the movements, अगर listener भी attentively speaker को अच्छी तरीके से जानना चाहता है, उसका state of mind समझना चाहता है, तो ये body language उसको help करता है. तो अभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज का इतना महत्व क्यों है. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन. First and foremost importance of body language is it enhances the verbal communication. अभी हमने देखा जब कोई स्पीकर बात करता है तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन में एडेड वैल्यू प्रोजेक्ट करता है, कंट्रीब्यूट करता है. बॉडी लैंग्वेज कैन मेक वर्बल कम्युनिकेशन मोर एंगेजिंग, persuasive and memorable as well. देखिए, हम जिस भी स्पीकर को सुनते हैं तो बॉडी मूवमेंट्स को अगर अटेंटिवली ऑब्जर्व करें तो दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर्स इंटेंशन. नॉन वर्बल क्यूज ओवरराइड वर्बल मैसेजेस, एज आई एक्सप्लेन्ड यू अ व्हाइल अगो. In some cases, what happens? Non-verbal communication, non-verbal cues can contradict with the verbal communication, and sometimes that may lead to misunderstanding. So, non-verbal जो communication होता है, जो body movement होता है, if that is in coordination with the message of the speaker and जो speaker कहना चाहता है उसी के साथ उसके body movements है, तो listener को वो मैसेज मोर मीनिंगफुल लगता है, पर्पसफुल लगता है और सिंसियर लगता है. और अगर जो बात कर रहा है स्पीकर उससे मिलते जुलते उसके बॉडी मूवमेंट्स नहीं है तो दैट कैन आल्सो क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग. एंड आल्सो लिसनर को ये बात समझ में आती है कि स्पीकर जो बात कहना चाहता है वो उसका इंटेंशन नहीं है, दैट ही इज प्रिटेंडिंग टू कन्वे समथिंग बट हिज इंटेंशंस, her intentions are somewhat different from what he or she is saying. What is the next significance that we can understand from this
discussion. Body language also helps us in expressing our emotions in a effective manner. Body language is often a more authentic and पावरफुल वे टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस देन वर्ड्स अलोन. तो जैसे भी हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे हमारे वर्ड्स कितने भी आर्टिकुलेटिव क्यों ना हो, फिगरेटिव क्यों ना हो, तो बॉडी लैंग्वेज जो है उसमें वो एम्फेसिस ऐड करने में हमें मदद करता है. ऑल्सो बॉडी लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस परसेप्शन एंड फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ अ पर्सन. बॉडी लैंग्वेज प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग फर्स्ट इंप्रेशंस and it also influences how others perceive us. जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि अगर बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, तो हम अपना जो इमेज है वो अपने ऑडियंस पर, हमारे लिसनर्स पर पॉजिटिवली प्रोजेक्ट करते हैं. एंड आवर फर्स्ट इंप्रेशंस आर फॉर्म्ड बाय आवर ऑडियंस ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी मूवमेंट्स. हमारी जो भी बॉडी मूवमेंट्स होती है उसके बेसिस पर ही हमारा फर्स्ट इंप्रेशन जो है प्रोजेक्ट होता है. दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड कंसिडर व्हेन वी आर डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन. नाउ लेट अस मूव ऑन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड what are the other elements that are involved in body language. Kinesics or movements, whatever you call it, and gestures also play very important role in body language. These are also very important parts of body language. Kinesics means the study of body movements during communication, during non-verbal communication. Gestures are the movements of your hands and arms. So there are different kinds of gestures we use while communicating with others, maybe with our individual or maybe with the audience of a large group. So gestures means अपने हाथ जो स्पीकर यूज करता है, अपने आर्म्स जो स्पीकर यूज करता है while communicating with others. तो जैसे हम बोलते वक्त ये ऐसे इस तरह से हाथ यूज़ करते हैं, या फिर कुछ बताने के लिए इस तरह से हाथ यूज़ करते हैं, जो डिस्कशंस हम अभी देखेंगे सामने. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जेस्चर्स आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल रोल in communication, especially in non-verbal communication. So sometimes there are descriptive gestures. So descriptive gestures means when we try to say something, for example, we use our hands to show the size of an object. So when we are saying that this small thing, the big thing, right, these gestures are used to describe objects, actions or concepts. डिस्क्रिप्टिव जेस्चर्स का यूज़ हम किसी ऑब्जेक्ट की साइज़ वो छोटी है बड़ी है बताने में करते हैं, या फिर कोई एक्शन को एम्फसाइज करने के लिए भी करते हैं. इंडिकेटिव जेस्चर्स आर यूज टू पॉइंट टू समथिंग एंड समवन. फॉर एग्जाम्पल, पॉइंटिंग टू अ स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप indicates that you are the person that met me during our last conference. तो indicative gestures का भी यूज़ होता है, जैसे कि हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, वो रहा बुक आपका जो आपने टेबल पर रखा था, something like that. Okay, indicative gestures play a very important role in non-verbal communication. There are some conventional gestures also. Like conventional gestures are somewhat similar to every culture. Showing nodding head like this shows yes or agreement. Nodding head like this shows no or disagreement. And these gestures are understood by everyone in and around. Most of the people can understand conventional gestures. Sometimes when we show thumbs up, it shows that it's correct, it's good, it's good to go. Locative gestures are those which are used to indicate location or direction. For example, pointing to a specific place on a map or a specific thing that is there somewhere around. So locative gestures show the location of a thing, object or person or something like that. I hope I'm clear with describing and explaining the different kinds of gestures that are used in non-verbal communication. There are some other non-verbal behaviors that play very important role in non-verbal communication. First and foremost thing is body posture. Body posture means a whole body of a person. If it is upright, it shows that
you are showing confidence, you are showing good mood, you are showing good intention. So body posture is a non-verbal behavior that projects your confidence. आपका यानी स्पीकर का कॉन्फिडेंस, उसका मूड, उसके इंटेंशंस को शो करता है. Equally, eye movements also play a very important role in non-verbal communication. It shows interest, it shows boredom, it shows deception. The kind of movements of eye are, so they show that what kind of intentions a person, a speaker is showing, a person or speaker is having. Most of these are related to showing the intentions of a speaker. Avoiding eye contact can show that the person is not trustworthy and the person can be a dishonest person. Likewise, जैसे हम आई कॉन्टैक्ट के बारे में अगर डिस्कस करें तो आई कॉन्टैक्ट भी एक नॉन वर्बल बिहेवियर है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, जहां अगर हम यानी स्पीकर लिसनर के साथ प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करता है तो दैट helps us build a good rapport with the listener, good rapport with the audience. And maintaining eye contact can help to showcase, to project the speaker as a sincere and trustworthy person. Eye contact plays very important role. It is very crucial to maintain eye contact if you are good and honest person. Another point very important in non-verbal communication is proxemics. Proxemics refers to the use of space in communication. It is a kind of physical space, the distance we keep from others while communicating. When we discuss with the strangers, when we talk with the strangers, we tend to keep a long distance. Another non-verbal behavior is proxemics. Proxemics means यूज ऑफ स्पेस इन कम्युनिकेशन. जो स्पेस हम बोलते वक्त अपने में और एक स्पीकर जो अपने लिसनर में रखता है उसको हम प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं. तो अगर हम पहचान वाले अक्वेंटेंसेस के साथ, फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं तो दो व्यक्तियों के बीच, दो इंडिविजुअल के बीच जो है स्पेस थोड़ा कम रहता है. और हम किसी स्ट्रेंजर्स के साथ या फिर नॉन अक्वेंटेंसेस के साथ बोलते हैं तो दोनों के बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है. When we speak with the strangers and if we keep a space good enough, that shows discomfort. Okay, हम अगर किसी स्ट्रेंजर्स के साथ बात कर रहे हो तो लिसनर और स्पीकर के बीच जो है फिजिकल स्पेस ज़्यादा होता है. That shows discomfort, right? And that shows formality, that shows that we are yet to know each other, and the distance shows that they are strangers. Proxemics also plays very important role in identifying how the communication is going on, whether that the communication is between two familiar persons or two unfamiliar persons. Now let us try to discuss positive body language. In non-verbal communication, there are two types of body language. One is positive body language and the other is negative body language. Positive body language helps us showcase the speaker in an honest and sincere way, in a confident way. When the speaker is talking and the listener is intermittently nodding his or her head, it shows that listener is showing interest and is interested in what the other person is saying. Similarly, our eyebrows also play a very important role in showcasing positive body language. If our eyebrows are slightly raised, it shows surprise or interest, and it also shows agreement. Maintaining eye contact, maintaining appropriate eye contact shows that you are engaged and interested in the conversation. अगर हम as a speaker eye contact maintain करते हैं तो उसमें हम अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, स्पीकर की बातों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है, ऐसा भी प्रोजेक्ट होता है. अगर हम फर्म हैंडशेक करते हैं तो that shows कि we are confident, that shows कि we respect the person, that shows we are trustworthy. So trustworthiness, confidence और respect को अगर प्रोजेक्ट करना है तो when we are shaking hands with others, we should have a firm handshake and we should avoid loose or reluctant handshake. Smile on the face, as you know, it's a universal accessory. If you are smiling enough, your posture is upright enough, it shows that you are friendly, you are confident, you are approachable. If you're not smiling, then
you are not approachable, you are not friendly, you are not confident enough. That shows. Now let us try to discuss something about what are the things that project negativity about the speaker. ऐसी कौन सी बातें हैं जो निगेटिव बॉडी लैंग्वेज में आती है? Simply, first thing is tapping fingers on the table or tapping fingers with each other shows that you are impatient, you are nervous, you are bored. Fingers को tap करते रहना या फिर fingers को टेबल पर टैप करते रहना वो शो करता है कि स्पीकर इज नर्वस. या सिंपली लिसनर भी अगर फिंगर्स को टैप करता है तो इट शोज दैट दे आर बोर्ड, दे डोंट वांट योर इन्फॉर्मेशन. सिमिलरली हम अगर क्रॉस्ड आर्म्स या फिर क्रॉस्ड लेग्स करके खड़े रहते हैं या फिर हमारी बात करते हैं तो दैट शोज़ कि वी आर डिफेंसिव, दैट शोज़ कि वी आर डिसइंटरेस्टेड इन द स्पीकर्स इंफॉर्मेशन. एंड क्लोज्ड ऑफ एटीट्यूड वो शो करता है. अगर हम अपने आर्म्स को, हमने लेग्स को जब हम खड़े होते हैं उसको अगर क्रॉस करके खड़े रहते हैं तो इट शोज़ कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन what the speaker is saying, what the speaker is trying to convey to us. Similarly, slouching or lowered body posture shows that you are not confident, you lack confidence, you are not interested, you are showing sadness of some kind. तो जो आपके शोल्डर्स डाउन है, आपका हेड इज़ नॉट अपराइट, और अगर ऐसी आपकी बॉडी पोस्चर है जिसे हम लोअर्ड बॉडी पोस्चर कहते हैं तो इट शोज़ कि यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस, यू आर नॉट इंटरेस्टेड. आपको अगर निगेटिविटी प्रोजेक्ट नहीं करनी है तो आपको इस बात को अवॉइड करना पड़ेगा. और सिमिलरली अगर आप इस बॉडी लैंग्वेज को किसी में देखते हैं तो मेक श्योर के द पर्सन इज नॉट हैविंग इनफ कॉन्फिडेंस. सिमिलरली अगर ये बात आप किसी स्पीकर में देखते हो तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, समझ जाना है कि the speaker is lacking confidence, the speaker is lacking interest, and he or she is showing some kind of sadness. आपने कभी ये नोटिस किया है कि कोई स्पीकर अगर स्टेज पे जाता है तो वो फास्ट ब्रीथ करता है? फास्ट ब्रीदिंग शोज एंग्जाइटी, फास्ट ब्रीदिंग शोज स्ट्रेस, इट शोज नर्वसनेस. जब भी कभी अगर फर्स्ट टाइम स्टेज पे गए हो तो आपने नोटिस किया होगा, या फिर try to remember the moment when you were on the stage for the first time, you were breathing fast. Okay, that shows nervousness, that shows stress, that shows kind of anxiety. तो अगर आप ये बात किसी स्पीकर में नोटिस करते हैं तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज. एंड सिमिलरली अगर someone is blinking very rapidly, that is a sign of nervousness, that is a sign of discomfort, that is a sign of even deception. तो आपको ऐसे लोग अगर बात करते हुए नजर आते हैं जो रैपिड आई मूवमेंट्स करते हैं, रैपिड ब्लिंकिंग करते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि these persons are not trustworthy. Now let us try to discuss few of the review questions. The first question is, what is body language, and discuss the importance of body language in spoken communication. When we are discussing about body language तो आपको पहले डिफाइन करना है कि बॉडी लैंग्वेज क्या है. बॉडी लैंग्वेज में कौन कौन से बॉडी के बिहेवियर्स आते हैं, कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स आते हैं जिनका ऑब्जर्वेशन ज़रूरी होता है, और दैट बॉडी लैंग्वेज, दैट बॉडी मूवमेंट, दैट बॉडी बिहेवियर plays what kind of role in communication. And later you have to discuss the importance of body language in spoken communication. You have to explain each and every point in a detailed way so that you get good understanding and you present your ideas in a proper way. Second important question that we can discuss on this topic is, explain positive and negative body language in spoken communication. Here also first you have to define what is body language and what kind of significance it is having in spoken communication. Then you write down what are the points that come under positive body language, and later you also discuss what are the points that come under the negative body language. After explaining all these points, you write a very good conclusion to your answer, and then you are good to go. So these are the two questions that are based on this topic, and you can go to respective sections of the video to have a review of what you have learned so far. Make your notes and
try to practice your answers to these questions. I hope I am very much clear with this topic, and if you want to watch more videos on such topics, please consider subscribing my channel. See you in the next video. Thank you.